Hello and a very warm morning to all our viewers on our very special show Sports Cafe. Yes, here we bring you with latest updates on sports from across the world from the eminent and the prominent newspapers. In case you have missed the latest headlines, not to worry, we are here. And the second segment we'll be talking about is Yuvraj Dhoni blasts tons as India clinched series in second ODI. Saina Jairam storms into quarterfinals of Malaysia Masters. That was a nice win. Punjab Royals lifts the trophy with scintillating 504 win over Haryana Hammers. In the Pro Wrestling League, Pace Ander and Sharon Raja knocked out in doubles first round of Australian Open. Well, we have today a very special and prominent sports expert in our studio, Rupinder Singh. Good morning, Rupi, and welcome to our show. Thank you. So, and the next segment of our show will be on health and fitness. And coming back on the first headlines that we had on the Cricket India and the ODI series. So, this was a brilliant win, we can say, a 15. So, let's see what the newspaper says. Breathless, Dhoni and Yuvraj blast tons as India clinched series against England. Mail Today कहता है, The Times of India, old guards safe ground. Kohli and co clinch series as Yuvraj Dhoni scores. Golden Oldies win series for India. MS Dhoni hit his 10th ODI century. And he's the only batsman to have scored 4,000 runs. The Indian Express says that naughties show. Cutter tells you why comeback Singh cannot be written off. दैनिक जागरण की एक खबर, टीम इंडिया ने जमाया सीरीज पर कब्जा. धोनी also becomes second batsman after Sachin. युवराज धोनी ने धो डाला, हिंदुस्तान ने चलाई ये खबर. युवी माही के धमाल से जीता भारत. अमर उजाला ने ये चलाई ये खबर. दैनिक भास्कर ने छापा है, धोनी युवी ने 10वीं बार की शतकीय साझेदारी. सभी मैच टीम इंडिया ने जीते. So how was the Yuvraj Stoke play, Rupi? Well, I think the real story was not told by the statistics. Yes, on statistics, Yuvraj and Dhoni were the two batsmen who created mayhem yesterday for India and probably ensured a very good victory. But the most important points were, one, cricket won. It was a great match till the last over. No one knew what was going to happen. Ian Morgan unfortunately run out and India clinching a very narrow thing. Two, England playing in India in different conditions is probably, I think, putting up a very good show. Even both the matches they've lost, they've played magnificently. And the third important point that I thought, which was the most striking point which most newspapers have missed out, is that Ashwin stuck to his line of bowling, test type of bowling, where he flighted the ball, went for runs, but he got those vital wickets. Yeah. The wickets of Ben Stokes and Josh Butler at that crucial stages were the two wickets that ensured victory for India. So although statistics and the newspapers are talking about Yuvraj and Dhoni, yes, for me the more critical question was the ability for Ashwin, especially after the first one-dayer, where he started from plan A, negative, bowl outside the lock stump. This time he went for plan A, flight the ball outside the off stump, give yourself a chance to take wickets, and he got 3 wickets. That was crucial. Yeah. In a game in which everyone is only looking for runs, it is very difficult for the bowlers. So the two real standout performances for India was Ashwin's bowling and then Bhuvnesh and Jasprit Bumrah in the final overs. The ability to bring in slow balls and yorkers and that change of pace which did the England batsmen in. Other than that, there was nothing scintillating. Absolutely, and
also, you know, when we talk about the performance, Yuvraj has never been that consistent, but I think, you know, his performance in this match, I think he won all the hearts. And talking about MS Dhoni, I think he's the only batsman after Sachin Tendulkar now to have scored 4,000 runs in India. Cricket is such a game that it gets dominated by the pitches. If you make a pitch for batsmen, anyone could have scored yesterday. It was a question of getting down and sticking to the basics and then scoring maximum, because the ball was doing nothing. England didn't have a spinner like Ashwin to trouble Dhoni or Yuvraj. There was nothing in the wicket to help the pacemen. The English bowlers did not bowl well, and Yuvraj and Dhoni made the best of their opportunity that I think came their way. The earlier Indian batsmen Rahul, Shikhar and Virat Kohli, who's been in brilliant form, were a little impatient and overconfident, and therefore they went in for strokes too early. If they had settled in, they would have also scored as much as Yuvraj and Dhoni. So for me, Yuvraj and Dhoni, statistically, yes, they were the cause for India's victory. But the more important thing was the ability of the bowlers, which is Ashwin. And this is one thing which doesn't get recognition in modern day cricket. They make pitches which are only meant for batsmen. What is a bowler expected to do on? They just come there to be massacred. And that is when the brains start working. And when Ashwin stands up, especially after that first one day when he bowled negatively, that was brilliant. And then Bumrah and Bhuvnesh in the final. The rest, everyone scored. Ian Morgan scored an effortless 102. Had he not got run out in that crucial second last over, he would have gone on to win the match for India. But winning and losing is not everything. You have to learn. And that learning lessons were given by Ashwin, were given by Jasprit Bumrah and Bhuvnesh Singh and Bhuvnesh Kumar. And that is where the English bowlers have to learn and improve. Other than that, there was no difference in the teams. Both teams could score easily. Why? Because the pitches were like that. This is a strange game. Unlike tennis, football, hockey, or wrestling or boxing, where you're on that same thing. Here the pitches, the curators, the groundsmen can make a huge difference. I think that was quite rightly put, and that was a very in-depth analysis of the game. Now coming on our second headlines for today, let's see what's there in the badminton world. Jairam Saina reach quarter-finals. Saina Nehwal beat Thailand's Chesini Koripap by 21-9, 21-8. Saina and Ajay seals quarter-finals berths. Ajay Jairam, Times of India कहता है, Hindustan Times कहता है, Saina Jairam in quarter-finals of Malaysia Masters. Saina Nehwal is desperately looking for a win. दैनिक जागरण ने चलाई ये खबर, साइना व जयराम जीते. दैनिक जागरण ने ये छापा. अजय जयराम एग्ड आउट 21-10. हिंदुस्तान कहता है साइना जयराम अंतिम 8 में. अजय जयराम एग्ड आउट 21-10, 17, 21, 21-14 विन ओवर जुनहाओ चांग. साइना जयराम अंतिम 8 में. अमर उजाला कहता है मलेशिया मास्टर्स ज्वाला और मनु की जोड़ी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर. दैनिक भास्कर कहता है साइना आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची. So don't you think, Rupi, I think after the knee surgery, you know, after she was Saina was derailed from her Rio Olympics campaign, she's desperately looking for a win. What do you think? Well, she's been fortunate. She got many very tough matches in the Premier Badminton League where she showed that she is recovering very well. This early part of the series, Malaysia Super Series, she's ranked number 1. We don't expect any opposition. Maybe semi-final finals will be slightly tough, and that will be the real test for Saina. As they've rightly put in the Hindustan Times, Times of India, easy wins for Saina, slightly tougher for Jairam, and that was the more appreciative of. It's more difficult in the men's section, and I would be more frankly looking at the success of Ajay Jairam as opposed to Saina. Saina, yes, will be tested in the semi-final and finals. Who are the opponents? Let's see, and then let's make a judgment. She lost out to Sindhu, as we saw.
Sindhu is much fitter at this stage, and but Saina is lot of coming back hard work. very well. Her Yes. mind is very, very good condition, and this is auguring well for India. Although she pointed out in the Premier League that Indian women's singles need more depth. We have only Saina and Sindhu. Indian men are really the ones making progress. You have Srikanth, you have Kashyap, you have Ajay Jairam, you have Sameer Verma, you have Saurabh Verma, and the list goes on. So Absolutely. that's the good thing about the men. Although they haven't won anything for Yes. India, they've not won a world championship medal in recent years or an Olympic medal. Therefore, that has still to be achieved by them, but the depth has improved, and this also augurs well for Indian badminton. Absolutely. So now coming on a third story for today, let's see what's there in the pro wrestling world. Punjab wins. That was a scintillating win by 5-4 over Haryana. Let's see what the newspapers has to say about that. Haryana hammered by Royals for PWL title. Mail today. Says Mail today. The Times of India says Punjab lift trophy with scintillating win. Punjab defeated Haryana in Pro Wrestling League final. Haryana, who remained undefeated so far. Hindustan Times says in tight final, Punjab wrest PWL title. Pro Wrestling League title. Punjab won a thrilling final 5-4 against. The Indian Express says the Punjab heat Haryana to win Pro Wrestling League Season 2. Punjab won a thrilling final 5-4 against the formidable. दैनिक जागरण ने छापा है जितेंद्र ने पंजाब को बनाया चैंपियन. काफी कमाल का प्रदर्शन रहा है. हिंदुस्तान हरियाणा को पटकनी देकर पंजाब रॉयल्स कुश्ती चैंपियन. हिंदुस्तान कहता है. अमर उजाला कहता है पंजाब रॉयल्स टीम बनी प्रो रेसलिंग लीग 2 की चैंपियन. अमर उजाला ने चलाई. दैनिक भास्कर कहता है हरियाणा को चित करके पंजाब बना प्रो रेसलिंग चैंपियन. Well, I think so. It was a very closely contested match. Both the teams putting their best foot forward. What do you think about that? Yes, it was wonderful. Wrestling and badminton, I think, are the two sports that are being organized well, and the children or the potential is responding, and we're getting our medals at the Olympic level mainly from these two sports. And it is because of the organization of such leagues at this basis. And what a final it was. Punjab, if you remember, or if all the viewers remember, had lost to Haryana in the league encounter. Yes. And it was therefore a thrilling final. The other thing is, this league offers opportunities for new Indian wrestlers to come up and compete with the world's best. We had seen in an earlier battle, Sandeep Tomar had beaten the Olympic champion King Shivali. King Shivali came back yesterday and beat Sandeep Tomar. So this is very good opportunity for the Indian wrestlers. The best wrestler of the tournament is a new Indian girl, Nirmala Devi. So people only remember people who win at the Olympics, but these are the new stars faces, yeah. and the new faces. And the most prominent bout, after it was 4-all, it was the 74 kilogram category, which people remember Sushil Kumar having brought medals to India, in which Narsingh Yadav was expected to go, and a new man, Jitender, wins that and makes the decisive point for Punjab to win the trophy. So great thing for Indian wrestlers, an opportunity to compete with the best, making a decisive point in the final by Jitendra in a 74 kilogram category, where India has done well in the past, and this augurs well for the future. And of course, Nirmala Devi, an Indian wrestler, getting the best wrestler of the tournament. So all going well for badminton and wrestling, and that's good news for Indian sport. Yeah, so I think more interesting part, as Rupi mentioned, is the new faces coming up. So now let's see कि आज हमारी अगली स्टोरी अखबारों ने क्या चलाया है टेनिस के बारे में. Bad day at the office for Indians. Mail today कहता है Tennis Leander Pace crashed out of Australian Open on Thursday. The Times of India says Leander dodged AITA bullet. Pace and his partner Andres are lost in the men's double round 1. Hindustan Times says aging Leander knocked out in first round. Raja Divij to lose.
हिंदुस्तान टाइम ने चलाई। दैनिक जागरण कहता है पेस और शरण राजा पुरुष डबल्स से बाहर, out of the tournament, and I think Rohan Bopana is one of the Indians who's left. हिंदुस्तान कहता है पेस, शरण और राजा युगल में हारे। हिंदुस्तान की एक खबर। अमर उजाला ने छापा है पेस, राजा, शरण पहले दौर में बाहर। दैनिक भास्कर ने चलाया पेस की जोड़ी हारी। पेस और ब्राजीलियन पार्टनर एंडरसा। So Pace and his Brazilian partner, and I think they were very much on win in the beginning. I mean, they had almost scored 81% of the points in the beginning serve. So, but at the end of the day, do you think that it's the age that's playing over this thing? It's not a question of age, it's probably the hunger and the changing of partners which is causing problems to Leander. Leander is a perfect example of a man who is aging, but because of consistent hard work, his physical fitness is there. But the hunger seems to be going out, and also the changing of partners is not doing him good. Last time he was with a partner called Radek Stepanek, and he was a brilliant player. So more and more now people are realizing at the double stage that it is important to keep winning. For example, take the Mirza-Hingis combination. The moment Hingis started to lose with Sania Mirza, she dropped Hingis, she dropped Sania Mirza, or whichever way you call it, and she is now partnering with Coco van der Wey, who's playing very well even in the singles. So when she gets an alternative, she goes to a better partner. Absolutely. But Mirza has been the most fortunate of the Indians. She's got a new partner, Barbara Strykova. She played very well in that first round. She's battling it out in the second round today. And Bopanna with Cuevas is also still in the fray for India in the doubles. But tennis is a story where Indian sport is not really doing well. First, the Indians, because of Leander Paes and Bhupati having had so much success in doubles, all the players are quickly jumping into doubles. And they are not fighting it out to come up in the singles. The only Indian man left is Yuki Bhamri, who lost out in the third qualifier. Good achievement. And that is what must be stressed, and those are the kind of people that must be encouraged, given the right kind of exposure and tournament. A very good story emerged today from our young boys, Prajna Gunaveshwaran, who had lost in the qualifiers as a wild card for the Australian Open tournament. And who beat him? None other than Denis Istomin, the man who beat and surpassed Djokovic yesterday. Great. And he lost narrowly to Istomin in that. So that shows that India has the talent. Yes. And that boy has really been encouraged by Istomin. Istomin is a fine striker of the ball. He serves very well, and he can trouble the best players on his best day. And yesterday he played superb tennis, and I don't think Djokovic has any excuses for having lost out to Istomin. Istomin served better, and Istomin hit better and could return all the serves. And remember, Istomin is not young. He is 1 year older to Novak Djokovic, 30-year-old. So that's encouragement for Leander Paes and the other Indian boys. Even though they are 27, you can go on and be the best in the world. You just have to persevere, find the right coaching, find the right exposure. So buck up India in tennis, follow badminton and wrestling. I think that's quite right. I think these days our Indian players have quite raised their levels of fitness in terms of sports. And so now coming on to our next story, देखते हैं अखबारों ने क्या चलाई है खबर हॉकी के बारे में. Rupinder to lead Delhi Wave Riders. Times of India ने छापा है ये. Ace track flicker Rupinder Pal Singh, the Indian Express Rupinder to lead Delhi Wave Raiders in Hockey India League. Ace track flicker Rupinder Pal Singh will lead Delhi Wave Raiders. दैनिक जागरण ने चलाई रुपिंदर दिल्ली के कप्तान. वेव रेडर्स जो इनकी टीम है, और 21 जनवरी को शुरू होने जा रहा है हॉकी इंडियन लीग. अमर उजाला ने छापा है HIL 5 में रुपिंदर होंगे दिल्ली वेव राइडर्स टीम के कप्तान. और देखने की बात है, इसमें यंग टैलेंट्स को भी शामिल किया गया है. दैनिक भास्कर, रुपिंदर पाल के हाथों में होगी दिल्ली की कप्तानी.
सो जो HIL स्टार्ट होने जा रहा है 21 जनवरी को, पांचवा एडिशन होगा ये HIL का. इसमें देखा जाए तो क्या स्कोप है? आई मीन, इज इट वेरी मच प्रोवोकिंग एंड प्रॉमिसिंग in terms of making it a premier hockey league in the world? And also to see there are these young players which have been also introduced in the teams, the captain of Indian hockey team. What do you think about that? I think hockey is doing a very good job. Hockey India president has just been elevated to be international hockey president, and Indian hockey is getting their finances together, and the world, like in cricket, has started in hockey to look towards India. So that's encouraging sign at the administrative level. At the playing level also there has been an improvement, but we have gone so far behind that we are finding it tough to come amongst the top 3. But there is improvement, and Hockey League has been instrumental in providing the Indian youngsters a big go. But the important thing is to coach the youngsters at that youth level and not worry about so much the national teams, because it's the youth. And Right. this is where Punjab has really done well. Pargat Singh, a former Hockey India captain, was part of the government in Punjab, was head of the sports. He saw to it that many astroturfs were put over all the villages of Punjab. And if you notice, this Indian junior hockey team which won the World Cup, 6 or 7 of those players are from Punjab, from those nurseries. So Absolutely. these are the nurseries that are vital for Indian sport. Please care for the young sporting talent of India. Don't just care for the top, that is the cream, that is the Sindhus of the world, or the Sakshis of the world, or the Sardar Singhs and the Rupinder Singhs. Care for that 14-year-old boy, give him the best coaching, and you will see the results come. India has potential as good as any in the world. Let me even take the opportunity to say that the whole world is playing in English Premier League, a Haitian, an African, a Senegalese, and earning millions of dollars. Indian boys can do the same. We need to give them the right exposure at the right time. We have, unfortunately, in Indian society, maybe we are developing, not given sport a chance. We've given the English speaking people a chance, the artists a chance, we've given the lawyers, the medicines, Right. the marketing people a chance by Absolutely. having the best opportunity for those kind of Absolutely. students. But unfortunately, we haven't given the sports children a chance. I think that was quite inspiring, and I really hope, we really hope that Indian players continue their hard work and they get all the support. Now coming on to our second segment, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, जो लोग एक्टिव हैं, जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, उन लोगों को एक्सरसाइज के साथ साथ एक बहुत अच्छी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. हमारी को होस्ट पूनम सिंह हमें ले जाएंगी डॉक्टर बानी के पास, जो है न्यूट्रिशनिस्ट, एंड हमें ले जाएंगी आयुर्वेदिक उपचार के जो हेड हैं उनके पास, वैद वैजराम. तो दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शो में हम बात करेंगे डाइट एक्सपर्ट से भी, जो कि आपको देंगे हेल्दी डाइट टिप्स, जिनको अपना के आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं. एक परफेक्ट डाइट वो डाइट होती है जो कि वेल बैलेंस्ड हो, और वेल बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि हम हर फूड ग्रुप से रोज़ वो खाना खाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो. एंड फूड ग्रुप्स का मतलब है कि हम अनाज भी खाएं, दालें भी खाएं, हम फल सब्जियां खाएं, फैट्स एंड शुगर्स खाने भी बहुत ज़रूरी हैं. सो हर चीज़ को एक बैलेंस प्रोपोर्शन में, दैट इज़ करेक्ट अमाउंट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स टू गेट अ परफेक्ट डाइट. ये परफेक्ट डाइट हमें बीमारी से दूर रखेगी, और बच्चों में और ख़ासकर महिलाओं में ये ज़रूरी है, बिकॉज़ उससे वो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी फ़ायदेमंद होती है. करेक्ट प्रोपोर्शन और करेक्ट मात्रा का मतलब है कि हम इनको उस अमाउंट में लें जो कि हमारे को अच्छी सेहत दे सकता है. व्हेन वी टॉक ऑफ सीरियल्स, मतलब कि अनाज, इससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है दिन में, और 60% ऑफ द टोटल डेज एनर्जी शुड बी obtained फ्रॉम सीरियल्स. दीज सीरियल्स इंक्लूड आवर चपातीज, राइस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सीरियल्स विच वी शुड कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस. The remaining portions are from proteins, that is दालें और milk products, anda, maas, machli, etc. And these foods should provide about 10 to 15% of our total energy.
व्हेन वी से करेक्ट प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये है कि जो हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स हैं डाइट के, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, इसका करेक्ट प्रोपोर्शन हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और 60% ऑफ द टोटल डेज एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं दालों से, मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध के प्रोडक्ट से, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाए जाते हैं और 10 to 15% ऑफ द टोटल एनर्जी दिन की वो प्रोटीन से मिलनी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ फैट्स। फैट्स एंड ऑयल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डाइट, और लोग समझते हैं कि फ़ैट नहीं खाना चाहिए और ये कम कर देना चाहिए। ज़रूर कम करना चाहिए, पर एटलीस्ट 20 to 30% टोटल डेज एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड बाय फैट्स, बिकॉज फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अस द नेसेसरी एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग द डे। एक बैलेंस डाइट खाने का मतलब ये नहीं कि हमें एक बहुत एक्सपेंसिव खाना खाना पड़ेगा। जो घर में चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम वही करेक्ट प्रोपोर्शन में खाएं, उससे बैलेंस डाइट बन जाएगी। ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट मिस कर लेते हैं, बहुत स्कूल के बच्चे मिस करते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग जल्दीबाजी में निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं खा पाते हैं। वो बहुत गलत है। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है खाना, और ब्रेकफास्ट में आप सीरियल इंक्लूड करें, फ्रूट्स इंक्लूड करें। अगर पराठा तला हुआ नहीं खाना चाहते तो बिना तले खा लें, दही के साथ खा लें, पोहा ले लें, उपमा ले लें, आजकल ओट्स बहुत चल रहे हैं। तो एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। लंच बैलेंस तब हो पाएगा कि अगर हम उसको हर फूड ग्रुप से ले लें, जैसे कि चपाती के साथ दाल, सब्ज़ी, दही, थोड़ा सैलड ज़रूर लें, और उसके बाद एक फल खा लें। डिनर भी ऐसे ही खाएं, पर ज़रूरी है कि हम डिनर थोड़ा जल्दी खाएं, सोने से एकदम पहले ना खाएं, क्योंकि उसमें हमें हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए डिनर का टाइम जो है थोड़ा सा जल्दी कर दें, और उसको इसी बैलेंस प्रोपोर्शन में रखें जिसमें सब फूड ग्रुप्स इंक्लूड हों। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि हर खाने के बीच में इतना लंबा गैप ना रखें। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ खा लें, जैसे कुछ चाय ले लें, ग्रीन टी ले लें, नट्स ले लें, और हेल्दी ऑप्शंस रखें अपने पास स्नैकिंग के, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। समोसा ना खाएं और भुने हुए चने खा लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज हमने बात करी बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट खाने से हम ज़रूर सेहतमंद रहेंगे, बट साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को टेंशन फ्री रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, और ये सब करने से हम ज़रूर फिट रह सकते हैं। दोस्तों, बचपन में माँ छोटी मोटी बीमारियों का तो इलाज यूं ही कर दिया करती थी, और उनका इलाज था उनकी रसोई में। हमारे साथ भी आज एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वैद्य विराज जी, जो हमें बताएंगे आयुर्वेदिक टिप्स, जिनसे हम घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। वैद्य जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। वैद्य जी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे रोज़मर्रा की बीमारियाँ हैं, खांसी, जुखाम, बुखार, उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं घर बैठे? देखिए पूनम जी, हमारी रसोई अपने आप में एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर है। आपने बात करी सर्दी, खांसी, जुखाम की, जो एक मौसम परिवर्तन होने पर बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हो जाती है। हमारी हल्दी, हमारी टर्मरिक, उससे हम अपना सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, यहाँ तक कि अस्थमेटिक समस्या का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको यूज़ कैसे करना है? आधा कप दूध के अंदर 1/4 टीस्पून आप हल्दी डाल दें और उसको गर्म करें। ये आप रात को सोने से पहले आप पी करके सोइएगा। सुबह आपका सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड 50% तक आपको ठीक मिलेगा। ऐसा आप 2 से 3 दिन लगातार करें, आपको सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड से निजात मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे आपको बार बार कफ, कोल्ड होगा ही नहीं। हल्दी के साथ साथ आप सौंठ यानी ड्राई जिंजर से भी अपना सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड ठीक कर सकते हैं। उसका भी लेने का वही तरीका रहेगा। करीबन 1/4 टीस्पून आप एक आधा कप दूध के अंदर डाल करके रात्रि को सोने से पहले आप 3 से 4 दिन उसको सेवन करें, और सुबह तक आपका जितना भी जमा कफ है वो सब निकल करके स्पिट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो हम सौंठ और हल्दी के द्वारा अपने मौसम परिवर्तन होने पर जो सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, जिससे हम बड़े से लेकर के बच्चे तक, बुजुर्गों तक हम परेशान रहते हैं, उन सबको, उन बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। क्या बात है वैद्य जी, मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स से आप अपने जीवन में ज़रूर बदलाव लाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां तो आप यूं ही दूर कर लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद पूनम जी। हमें उम्मीद है कि हमारे शो ने आपको ज़रूर मोटिवेट किया होगा, और अब आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखेंगे।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। चलिए, डीडी स्पोर्ट्स रखता है आपकी सेहत का खास ख्याल। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जहाँ की एक्सरसाइज के साथ साथ एक डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। आज के दिन क्या कुछ खास हुआ है खेल जगत में। स्पोर्ट्स आज का दिन 1992 में पाकिस्तान के महान कप्तान इमरान खान ने फैसलाबाद में श्रीलंका के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला था। ये हिंदुस्तान ने छापा है। और हम जानते हैं खेल में क्या कुछ खास है। शुक्रवार 20 जनवरी 2017 को इटली कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2017 गुजरात और शेष भारत एकादश टीम के बीच 5 दिवसीय मैच आज से। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम के 5वें दिन के मैच। प्रफुल्ल पटेल बने फीफा की वित्तीय समिति के सदस्य। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल को वर्ष 2021 तक के लिए फीफा की वित्तीय समिति का चेयरमैन बना दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपी जी आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और हमें सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स देने के लिए। कल हम लोग फिर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी समय, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। जानते हैं हमारी स्क्रीन पे फ्लैश होने जा रहे हैं फेसबुक दूरदर्शन स्पोर्ट्स, ट्विटर हैंडल है डीडी स्पोर्ट्स चैनल, यूट्यूब है दूरदर्शन स्पोर्ट्स, इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं @dd.sports। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। हम कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त कुछ नई स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। थैंक यू। हैव अ लवली डे।